बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सब्सक्राइबर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल आल टू लर्न। आज की इस वीडियो में हम एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे इकोनॉमिक्स का। अभी पीपीएससी की तरफ से लेक्चर इकोनॉमिक्स का पेपर आने वाला है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा सीएसएस के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। और वैसे आपके जो ऑब्जेक्टिव की इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़ में जिस भी टेस्ट में होते हैं, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ वेलफेयरिज्म अपीयर्स टू हैव फर्स्ट बीन यूज्ड बाय जॉन हिक्स 1959। जो फर्स्ट टर्म यूज़ हुई थी वेलफेयर, वो यूज़ हुई थी जॉन हिक्स ने 1959 में यूज़ की थी। और इकोनॉमिक वेलफेयर अ टर्म यूज बाय AC Pigo, नन ऑफ दी अबव। AC Pigo ने 1930 में यूज़ की हुई है, लेकिन नन ऑफ दी अबव इसमें आ रहा है, क्योंकि वेलफेयरिज्म जो है फर्स्ट टाइम जॉन हिक्स ने 1959 में यूज़ की थी। हु इज़ कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर JM केन्स को मॉडर्न इकोनॉमिक्स यानी फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हु रोड द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ट्रस्ट एंड मनी, प्रोफेसर JM केन्स ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पर फर्स्ट गिवन बाय रेंजर फ्रेसिच। तो अब हम इसका पढ़ते हैं। टू जो अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन, द जनरल अप्रोच ऑफ मेकिंग नो यूज ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल स्टेट अदर दैन दैट ऑफ पर्सनल वेलफेयर जनरेटेड में बी कॉल्ड वेलफेयरिज्म। तो वेलफेयरिज्म की डेफिनेशन क्या है? The general approach of making no use of any information about the social state other than that of personal welfare generated in them may be called welfareism. Or AC Pigo defined that part of welfare that can be brought directly or indirectly into relation with the major rod of money. The term used by AC Pigo in Professor JM Keynes is now the father of modern macroeconomics. The term macro has been derived from Greek word macro, which means large. It is study of aggregate or group part the entire economy, such as gross domestic product, total employment, aggregate demand, aggregate supply, total saving, general price level, etc. और जो पॉइंट 8 जो है रेंजर फ्रेंच के बारे में, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट गिवन बाय रेंजर फ्रांसिस इन 1933 में। जो टर्म मैक्रो और माइक्रो का जो टर्म है वो 1933 में रोजर रोंजनर फ्रांसिस ने यूज़ की थी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट आर दी टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? ऑल ऑफ दी अबव। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और इनकम पॉलिसी। इनको अलग से आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स टूल कौन से हैं? मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और इनकम पॉलिसी, क्योंकि ये एग्रीगेट से रिलेटेड है। जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ओवर रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो नॉमिनल जीडीपी को हम रियल जीडीपी डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई 100 करते हैं, तो हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर आता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट इज आल्सो नोन एज नेशनल इनकम। Keynesian theory of employment is based on the concept of both A and B, aggregate demand and aggregate supply. Who developed the concept of ISLM model? Hicks and Hansen. हिक्स और हैंसन ने LMIS जो था मॉडल वो किया था। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जो नंबर 9 था, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेट टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट टू सेट अ बिजनेस एक्टिविटी, promote economic growth and stabilize the price level, achievement of full employment and equilibrium in balance of payment. Fiscal policy related to the management of government revenue, expenditure and debt to achieve favorable effect and avoid unfavorable effect in income output and employment. Point number 11, the income policy. Through this policy, direct control is exercised over prices and wages. GDP deflator is nominal GDP, current prices divided by real GDP, base year prices. It is referred to the money value, 11 जो point है, it is referred to the money value of good and service produced in a country and year, in fact refer to national income of a country because it is money value of all good and services produced in a year or time. Aggregate supply equal to aggregate product, total factor income और national income, ये सारे equal होते हैं। और 14 point था, the ISLM model show how the level of national income and rate of interest are jointly determined by the simultaneous equilibrium in the two interdependent good and money markets. The subject matter of economic is distributed into two parts. The concept of consumer surplus was introduced in economics by
Alfred Marshall. The law of indifference is also known as law of three, law of substitution, law of equi-marginal utility, law of dimension marginal utility. क्वेश्चन नंबर 11 12 का मुझे आंसर में डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नेशनल इनकम इज NNP at factor cost. Planned investment equal to saving only at equilibrium point GDP. Is investment and saving respectively injection and leakages. Suppose a family consumption exceed its disposable income. This means that its APC is greater than 1. The standard of living is often measured by real GDP per capita. Deflation means less money, high value. Third stage of law of variable proportion is negative return. The first theory of money concept was associated with Aristotle. Pure inflation means that price of a good and input rise at the same rate. JB say laws JB says laws of market associated with good market. Which of the following is a say law of classical exemption? All of these. Closed economy, labor and homogeneous. Labors are homogeneous. Flexible prices and flexible wages. Y equal to C plus I and Y equal to C plus S. Identify the author of the Affluent Society 1958 में J.K. Galbraith, who is author of Asian Drama, an inquiry into the cause of poverty of nation 1968 में Gunnar Myrdal. एशियन ड्रामा गुनर मर्डर ने लिखा था. According to modern World Bank report, Pakistan is a third world country. Point 15 था, the good market is also known as real sector as product sector of the economy. 16 था, there is no foreign trade and no government closed economy में. Third world mean developing countries. Simon Quotient is associated with GDP. According to Mr. Robin, the stage of golden age equal to capital growth equal to labor growth rate. जितनी रेट से लेबर ग्रोथ करता है उतनी रेट से कैपिटल ग्रोथ करता है. क्वेश्चन नंबर 30 है. थ्री कोर वैल्यू ऑफ डेवलपमेंट कंसेप्ट वाज कॉइन्ड बाय Denis Goulet. Due to land reform of 1959, the number of farmers benefited were around 1,86,555. Banks and other corporations were nationalized by Zulfikar Ali Bhutto. State Bank of Pakistan was established 1 जुलाई 1948. FPSC में भी 2015 में आया था. PPSC में 2017 में आया था. 18 में आया था. EATA में 2011-16 में आया था. PPSC में 2015 में आया था. 1 जुलाई 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुआ तो नेशनल बैंक 1949 में हुआ था. डेरिवेटिव आल्सो नोन एज डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिराइव्ड फंक्शन. डेरिवेटिव को डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहता है और डिराइव्ड फंक्शन भी कहता है. अकॉर्डिंग टू साइमन कोजेंट, the relationship between GNP per capita and inequality in the distribution of income can be expressed as first increase and then decreasing. Bank and other corporations were nationalized by Zulfikar Ali Bhutto in 1972. The nationalization program began on 2nd January 1972. First governor Zahid Hussain थे. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो स्टेट बैंक को चलाते हैं और जो फर्स्ट गवर्नर थे जाहिद हुसैन थे. ये जो नीचे आप पॉइंट में जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इनसे मज़ीद क्वेश्चन भी बन सकते हैं. एक क्वेश्चन आता है कि स्टेट बैंक कौन चलाता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ अ हाइपरबोला. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो हाइपरबोला होता है. द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज ज़ीरो. द वर्ड मुदारबा इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड अलजर्ब. In Islam, real and absolute ownership of property lies with the none of the above. Government owner of the property buyer and seller, क्योंकि अल्लाह के पास जो होते हैं real owner जो होते हैं. In fiqh terminology, zakat mean financial devotion. Oldest Nobel literature economist to get the Nobel Prize is Leonid Horowitz. The definition of M2 include all of these. M1 saving deposit or time deposit. M2 definition saving deposit and time deposit. 21 point, the f of x equal to axk plus bx plus c w or a not equal to 0. In case of mathematics, the slope of a constant is 0. The word derivative really mean derived function. The derivative of a constant function y equal to k or fx is equal to k is 0. Other party conduct business with this capital under an agreement of
receiving fixed share of the profit. In Islam, real and absolute ownership of property lies only with Allah. Won Nobel Prize 2007 जो थे ये जो थे ओल्डेस्ट जो थे हमारे पास लियोनियस और 2007 में इन्होंने लिया था. वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोबल लिटरेचर एंड नोबल नोबल हिस्ट्री. Question number 42. According to the classical economists, interest was a real phenomena. In a closed economy, aggregate demand is the sum of C plus I plus G. The bond supply curve is upward slope. In the liquidity trap, money demand curve is horizontal. Credit money is created by commercial bank. According to classical, the money remained neutral. The quantity theory of money equation was presented by Irving Fisher. अब हम जो पॉइंट 27, द रियल सिचुएशन इज दैट इंटरेस्ट शुड बी treated as real phenomena if the long run equilibrium value is not affected by exogenous changes which do not also affect the relative prices and only affected by exogenous changes which do affect the relative prices. कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होते हैं, फिर एक्चुअल इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्लानिंग इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, net export including that the price rises strict purpose the quantity supply increases. In simply word, there is a positive relationship between price and quantity supply of bond. Everything is equal. Question number 49. In classical theory, the quality between saving and investment is brought about rate of interest. Who said lack of money is root of all the evil? George Bernard Shaw. The exchange rate between any two currencies is kept the same in different monetary centers by arbitrage. 1930 is also known as stiff tariff year. 1930 is also known as stiff tariff year. According to modern economists, the necessary and sufficient condition for the trade between two countries comparative cost differences. Ricardo has based his law of comparative advantage on the basis of labor theory of value. Net export is equal to export minus import. Point number 34. When only two currencies and two monetary centers are involved in arbitrage is known as two-point arbitrage. When three currencies and three monetary centers are involved, known triangle or three-point arbitrage. Classical explanation of theory of comparative cost was based on labor cost. Comparative advantage is comprised comparison based on opportunity cost. According to classical and neoclassical economists, international trade is a price phenomenon. Robin crops include all of the above: lentil, Mysore or tobacco, wheat and grams and mustard, or rapeseed and barley. Elastic revenue response to marginal tax rate reduction is called Laffer curve. अच्छा, according to classical and neoclassical economists, international trade is a price phenomena. Rabi crops include, ये हमने पढ़ चुका है. Elastic revenue 59 question. Elastic revenue response to marginal tax rate reduction is called Laffer curve. Which tax cannot be shifted to the other? Entertainment tax. Ultimate burden of tax is known as incidence. The main source of revenue of federal government is income tax. Laffer curve suggests that relationship between tax revenue and tax rate is inverted U-shape. Laffer curve show relationship between tax revenue and tax rate is inverted U-shape. ये in the incidence of tax refer to ultimately pay the tax. Question number 64. The turnover tax is an important source of revenue in the developing countries. That World War II is also introduced the special wartime tax known as post-war credits. The personal income tax is an example of progressive tax in market generate a negative externality. The social cost curve is above supply curve. Arrow social choice and individual value criteria is determined by 5 conditions.
Question number 60. A new welfare economist was led by all of the above: J.R. Hicks, N. Calodor, and T. Stovsky. Pigo economics of welfare is a positive economics. High unemployment is undesirable because it results in a loss of output. टर्नओवर टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. द टर्नओवर टैक्स इज आल्सो नोन एज जनरल सेल टैक्स in the gross income tax. First world donate industrially advanced capitalism rich countries. If a market generate a negative externality, PIGO tax will move to the market toward more efficient outcome. Private cost curve होता है ये point number 40 जो है. 71 क्वेश्चन है. प्राइस राइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 or 3% is often called creeping inflation. The wholesale price index is also called producer price index. Hyperinflation happened in Germany in 1922 and 1923. Important question है. Hyperinflation 1922 और 1923 में जर्मनी में आया था. Cyclical unemployment is the unemployment that occur during recession and depression. According to supply side economists, which one is cause of stagflation 1970? Supply shock. In classical theory of employment, there is a possibility of voluntary unemployment. Stock and Watson found that monetary policy was responsible for about 30 to 40% of reduction in output volatility that occurred in the mid-1980s. When the economy moved into recession, many firms find their sale falling and cut back on production. As production falls, they start laying off workers. Workers also lose their job because of the recession or experiencing cyclical employment. Supply shock cause of stagflation and high inflation and unemployment. Definition of stagflation. तो ये थी मेरे पास इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर जो आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल होगा. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपको उसकी अपडेट मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह.